right now we are in a different type of company, a plastic-based company. Uh, the name of the company is Grohill Plastics, which is in Unjha in Gujarat. And this particular company, it's a small-scale company, and what it does is that it takes the raw plastic material and prepares the mold, the cast for basically the battery, basically the mold of the plastic container that holds the batteries, right? So that plastic container is made over here by them, and so they use PLC based machine. It's a small scale machine, but so we'll come to know about what this particular machine does, and we'll also have a look at the PLC panel that is there in this particular machine. So I have with me Mr. Yadav, Mr. Santosh Yadav, one of the executives of this company. Mr. Yadav, could you please explain the process that is followed over here in order to prepare the frame that is made for the batteries, the plastic batteries? इसका ये मटेरियल आता है दाना, इसमें कलर मिक्स करके कलर में यूज करते हैं। और ये प्लास्टिक है? हाँ। और दूसरा नेचुरल में निकालना, वाइट में तो कलर नहीं डालते हैं। अच्छा, तो ये प्लास्टिक मटेरियल आप प्रोक्योर करते हैं, और ये प्रोक्योर करने के बाद ये मटेरियल को लेके आप जो केसिंग जो है बैटरी का, वो केसिंग बनाते हैं। हाँ, इसका हम इस बॉक्स बनाते हैं बैटरी का। अभी ये मटेरियल जो उधर बनाया दिखा है वो इसमें डालते हैं, इधर से फिर मशीन में मेल्ट होके जाएगा, फिर बॉक्स बन के निकलेगा डाई से। अभी ये गेट बंद करेंगे तो भी डाई बंद होगा, बंद होने के बाद भी इंजेक्शन मारेगा, तभी वो शॉट मारने के बाद भी तैयार होगा पीस। फिर कूलिंग टाइम जब पूरा होगा तो खुलेगा, इसके पहले नहीं खुलेगा। अभी इंजेक्शन मारेगा। अभी रिफिल होके पीछे जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा नहीं। टेम्परेचर इसका 240 है। प्रोसेस में भी अभी ये कूलिंग पूरा हुआ, मोल्ड ओपन हो गया। अब मोल्ड ओपन हो गया, गेट खोल के भी पीस ले लेगा, फिर उसको बंद करेंगे, तब उधर से इंजेक्शन मारेगा टनेज लेने के बाद। इसमें स्पीड है, प्रेशर है और पोजीशन है, नीचे टाइम है। यहाँ से अभी बंद होगा, ये पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर इधर मोल्ड सेफ्टी आएगा, फिर ये टनेज में आ जाएगा। टनेज में आने के बाद ही वो इंजेक्शन मारेगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है? हाँ। अभी जब ये पूरा हो जाएगा तो कूलिंग टाइम इसका पूरा होगा। इधर कूलिंग रखे हैं ना 40, वो कूलिंग टाइम पूरा होने के बाद ही मोल्ड खुलेगा। उसके अंदर वो रिफिलिंग होगा, इंजेक्शन मारेगा, सब पूरा फंक्शन चालू रहेगा। इसमें इंजेक्शन का ये सब रखा है, स्पीड, प्रेशर, पोजीशन, टाइम, सब इंजेक्शन का है। पाँच स्टेप में। हाँ। कितना टाइम लगता है एक पीस को बनाने के लिए? एक पीस बनाने में 64.95 सेकेंड जाएगा। नहीं, 20 नहीं बना है, इसमें
घंटे का दिखा रहा है इसमें 48, 43, 47, 38 हर घंटे का अलग अलग है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो रुक जाएगा, कुछ फंक्शन चालू नहीं होगा फिर। सादा दिख रहा है, ऊपर जितने डाले सादा दिख रहे हैं, तो ये लाल कैसे बन रहे हैं? कलर डालते हैं ना, तो अभी दाना तो सादा है, अभी नहीं, ये अंदर कलर डालते हैं। नहीं उधर ही मिक्स कर, आपको दिखाया ना, उधर ही कलर मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग किया हुआ है वो पीस को उल्टा। So what you have just seen so far is basically a plastic container making machine which is an injection molding machine. This machine is the Sprint 350H model of the company Windsor, which makes this machine. And so in this machine what is happening is the raw materials are procured and they are put as input to this machine, and this machine, you know, after you have set up all these different parameters through this PLC panel, based on the parameters that are set, the machine basically takes those input raw materials, and then based on the shape, the cast and so on, this machine basically prepares the final output, the case that is required for the batteries. So what is very important is to notice that it's a very precise job that has to be done. So for precision, there are number of sensors that are used in this machine and the similar ones. So, so these sensors basically are very important in order to get the specific measurements that are required, because you know, if you do not have accurate measurements that are done, then what will happen is the final job is not going to be perfect as per the requirements. So essentially what we have is a cyber physical system which has number of different types of sensors. These sensors basically capture the different measurements that are required. So in this particular case, one of the sensors is it basically senses the measurements in terms of how much length this particular this piston is going to move for, and based on that it is going to move for that much amount of distance, and then what happens is this sensing, based on the sensed data, the actual operations are performed, and based on the actual operations the decisions are different, there are different decisions that are made, and then there is a feedback control that feeds the controller about what has to be done next. This is not a perfect example of an industrial IoT, or it's not really a machine which will cater to the requirements of Industry 4.0. And as you have seen for Industry 4.0, what is required are different components. First of all, information or data acquisition through the help of different sensors and so on, which is already there, but after that the processing has to be done, and based on the processing the different decisions has to be made, and based on the decisions there is a feedback control that has to be sent back to the machine or elsewhere for further actions. So this is one machine. Like this, there are few other machines in this particular company, and all of these machines could also be interconnected. So interconnection, as I told you earlier, is a very important component of IIoT and Industry 4.0. So interconnection, interconnectivity between these different machines, and having all of them controlled through either centralized or a distributed mechanism, or a combination of both, is what is required. Additionally, there are other important issues in Industry 4.0, issues of basically maintenance, right? So if there is some defect that has happened, then how do you take care of it? So let us say that in the production process there is some defect that comes in. So one way is to manually go and correct whatever has gone wrong. The other thing could be that if you already have this automated system built in which will detect the error, and then that will be detected, the signals will be sent and the corrections are going to be made all
autonomously, then that is what is more desirable. So that will be a fully autonomous system. So this is what is required. So this is just to show how some of these industries are functioning and how an industry which is not yet there for industry 4.0 compliance, how you can have different transformations in these different machineries of these companies to make them more compliant with industry 4.0 requirements. So industry 4.0 requirements, what is important is to have sensing, actuation, data processing, decision making and feedback control. So essentially these are some of these important components of a cyber physical system as well. So what is also important, the last component I would say, what is important is the fault detection, maintenance and automated detection and maintenance of faults is a very important component. So let us see how these companies and others similar ones, small or big ones, how they transform themselves in the next few years towards industry 4.0 compliance. So in the previous workshop floor, what we have seen is basically how to make this, which is essentially the casing for the battery. And this is a plastic based casing, and through injection molding process, as we have seen, this particular case is made. And so this was done by the machine which is the Sprint H350 machine, and another machine, the Sprint H250 machine, basically prepares the lead. So this is the lead of the machine, and there are other few similar kinds of machines that are here in this particular company, which will make the other different plastic parts like the handle, the screws that are there. So this screw, similar kind of screws will also be made. So the screw basically gets in and so on. So the entire plastic casing, that means the bottom part as well as the top part, the lead, all of these are made in the different floors through the different workshop processes in this company. So what I was talking about is the industry 4.0. So industry 4.0, I have told you already that you need the interconnectivity between the different components of data acquisition through sensing, processing, then the feedback control, and also the operator maintenance, automation of all of these things and so on. But one of the very important things that I did not mention, which is also very important, is the interconnectivity within the machine and interconnectivity across the different machines. So for example, this part was made by one of the machines in another machine floor. This is made by another machine in this particular machine floor, and there are other parts that are made by other machines. So wouldn't it be very nice to have all of these different machines interconnected with one another? So essentially what happens is that when the bottom part is made, after that the signals are sent to the next machine, which will take the process over, and automatically things are going to be started. So all of these machines, if they are all interconnected, that is going to be the advantage. You are going to reduce the downtime and you are going to improve the overall productivity in the process, and also consequently what is going to happen is the quality, overall quality in terms of the product, quality in terms of the processes, the efficiency, the productivity and economic benefits, all of these things are going to come through. So as you can see that when we will try to transition ourselves to industry 4.0, then what is going to happen is we are going to gradually we are going to acquire all these different benefits into the processes, and hopefully these industry, this one and many other similar industry who are maybe they are small in size now but very progressive minded, what is going to happen probably is in the years to come, maybe in another 10 years or so, once they all are going to be industry 4.0 compliant, all of this automation that I told you, the interconnectivity between the different machines, the automation, the collection of all this data from these individual different machines and putting them all together to have better inferencing and so on. So all of these things are going to come in place, and there is going to be improved productivity. So this is just a case study to show you how the machines which are not, the industries which are not yet there
how they can transform themselves into to make them Industry 4.0 compliant. So right now we are in another type of company, which is basically a company which focuses on taking raw plastic materials and then converting them into plastic bottles. So behind me is a machine, a smart machine, which is used for making these plastic bottles. It is known as the single state blow molding machine, and this particular machine, as you will see, what it does is it takes the raw plastic materials and based on the program that is stored in this machine, basically then that program, the instructions are taken and the plastic bottles are made. So this is an intelligent machine where you can do the programming using the man-machine interface, the MMI interface which is there, and through the instructions that are basically programmed through the MMI, the instructions are taken through the PLC, which is in this particular machine, the programmable logic controller which is there, so which takes those instructions, and those instructions are passed to the machine for taking the corresponding actions. So this is one such machine which could be used to make the factory floors smart, so you can have smart factories. But as you can understand that this is one machine, like this there could be several other different types of machines. So if you are talking about a smart factory floor, the interconnection between all these different machines is very important, so that these machines you can do the monitoring of all the machines, the health monitoring of all the different machines, the type of the operational efficiency also could be monitored. So like this different types of monitoring could be done. The data that is coming from these machines, these could also be stored, and different predictive and operational efficiency could be, the predictions can be made. So a lot of different things could be done, but you know, at this point what this machine does is intelligently it takes the commands and then transform the raw materials into plastic bottles. So let us have a look at how this particular machine functions. मेरा चेहरा भी नहीं आ रहा है वैसे तो। ये मटेरियल है पॉलीइथिलीन टर्पथैलेट, जिससे ये बॉटल फार्मास्यूटिकल पेट बॉटल यहाँ से प्रोड्यूस होती है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरी प्रोसेस के बारे में मालूमात दे रहा हूँ। ये मटेरियल फुल्ली हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। एटमॉस्फेयर में रखने के बाद इसमें पूरा मॉइस्चर आ जाता है। ये मटेरियल में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग पहले ये मटेरियल को वो ड्रम में लोड करते हैं। ड्रम में से ये मटेरियल ऑटो लोडिंग सिस्टम के द्वारा ऊपर हॉपर में जाता है। हॉपर में हम लोग 150 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। वो टेम्परेचर से पहले मटेरियल से पूरा मॉइस्चर बाहर निकाला जाता है। फिर ये हॉपर के द्वारा ये मटेरियल पूरा नीचे बैरल में आता है, जो मशीन से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं बैरल के ऊपर में एक मोवा कलर डोजिंग यूनिट लगा हुआ है, जिससे हम लोग तरह तरह के कलर की बॉटलें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये पार्ट के थ्रू ये बैरल बोला जाता है, ये पूरा बैरल बोला जाता है। ये बैरल के अंदर में हम लोग 250 डिग्री के ऊपर ये मटेरियल को गर्म करते हैं। जो मटेरियल मेल्टेड मटेरियल आगे जा कर के HR ब्लॉक बोलते हैं, जो पूरा डाई का हिस्सा है हमारे मोल्ड का, उसके अंदर जा कर के एक प्रीफॉर्म का रूप लेता है। ये प्रीफॉर्म आगे जा कर के हम लोग ब्लो मोल्ड में भेजते हैं। ये मशीन के द्वारा ही पूरी प्रोसेस आगे बढ़ती है ऑटोमेटिक। ब्लो मोल्ड में जा कर के जो प्रीफॉर्म है वो 180 डिग्री के ऊपर रहता है। प्रीफॉर्म के अंदर में 40 बार का प्रेशर हवा का ब्लो करते हैं, जिससे जो भी मोल्ड वहाँ पे रहता है, जो आर्टिकल का शेप हमको देना है वो मोल्ड वहाँ पे लेता है, और वो पूरा आर्टिकल का शेप वो लेकर के बाहर इजेक्ट हो जाता है। ये MMI है, जिसके ऊपर हम जो भी पैरामीटर लोड करते हैं मशीन के बॉटल बनाने के लिए, वो पूरे पैरामीटर ये MMI के थ्रू मशीन में लगी हुई PLC को जाती है, और ये प्रोग्राम के हिसाब से पूरा मशीन रन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मित्सुबिशी का ये PLC है, और वो PLC पूरी मशीन को MMI के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक आगे रन करता है।
और बाहर आप ये टेम्परेचर कंट्रोलर देख सकते हैं, जो टेम्परेचर कंट्रोलर बॉटल के शेप और मेल्टिंग करने के लिए जो बैरल का टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिखाई देंगे 4। ये 250 से 280 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर में मटेरियल को मेल्ट करके आगे प्रोसेस के लिए मोल्ड में भेजता है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा मोल्ड है जहाँ सबसे पहले HR ब्लॉक से डाई का पूरा नॉमेनक्लेचर चालू होता है। ये पूरा HR ब्लॉक है। HR ब्लॉक के ऊपर में सबसे पहले पंच आते हैं, पंच और नीचे कैविटी है। ये हमारा पंच है और ये नीचे हमारी कैविटी है। पंच और ये कैविटी, ये पूरा प्रीफॉर्म का शेप के लिए और वजन के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर प्रीफॉर्म बनने के बाद आगे वो ब्लो सेल में जाता है। अब ये जो पंच और कैविटी है, ये अपर मोल्ड और लोअर मोल्ड है, वो सेंसरों के थ्रू रन करता है। ये आप देख सकते हैं सेंसर्स, ये सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमेट्री स्विच बोलते हैं, जो अपर मोल्ड और लोअर मोल्ड को स्लो डाउन और फास्ट ओपन के लिए प्रोग्राम देते हैं PLC को, जहाँ ये सेंस करता है पूरा PLC। ये सीक्वेंसर स्विच बोलते हैं इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रीफॉर्म रोटेट होकर के ये ब्लो मोल्ड में आता है वो लिप कैविटी बोलते हैं। ये लिप कैविटी है, ये रोटेट होकर के आता है, इसको लिप कैविटी बोलते हैं। ये लिप कैविटी पार्ट है। और ब्लो मोल्ड के ऊपर में आप देख सकते हैं ब्लो कॉर को। ये ब्लो कॉर है जिसमें से हवा पाइप से 40 बार का प्रेशर प्रीफॉर्म के अंदर में ब्लो करता है, जिससे ये पूरा प्रीफॉर्म आर्टिकल का शेप ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक प्रीफॉर्म था ट्यूब की, जो ब्लो मोल्ड ओपन होने के बाद ब्लो मोल्ड में जो भी आर्टिकल का शेप था वो शेप लेकर के पूरा आउट में आता है। अब ये जो भी हमारा पार्ट है, चाहे लिप कैविटी हो चाहे ब्लो मोल्ड हो, वो पूरे सेंसर के ऊपर पूरा चलता है। आप यहाँ पे सेंसर देख सकते हैं। यहाँ आपको मैं ब्लो मोल्ड का भी सेंसर दिखा रहा हूँ नीचे में। ये ब्लो मोल्ड के सेंसर है। ये सेंसर PLC को कमांड देता है, जब भी वो क्लोज होगा तब जाके ब्लो कर उसमें हवा ब्लो करेगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये लोअर मोल्ड यहाँ से उठेगा, फिर रोटेट होकर के दूसरा प्रीफॉर्म आता है। इस तरह का पूरा साइकिल ये प्रॉक्सिमेट्री सेंसरों के ऊपर में ही PLC के द्वारा चलता है।